Curtain Raiser Press Conference. Shri Ramesh Chand, member of Niti Aayog, to brief the media on 32nd International Conference of Agricultural Economists (ICAE) on the theme Transformation Towards Sustainable Agri-Food Systems. Dr. Himanshu Pathak, DG, ICR, Shri Shahid Rashid, Shri Pratap S. Berthal, Shri P. K. Joshi and SMT Smita Sirui will also be present in the Curtain Raiser press conference. On the 30th of July 2024 at ICAR National Institute of Agricultural Economics and Policy Research, ICAR NIAP, Pusa, New Delhi 110,012. Colleagues, members of media, a very good afternoon. IPRI is really pleased to be part of this conference. Let me give you some context why. IPRI has two director generals who served as the president of this association in the last 25 years. That is number one. Number two, IPRI is part of the CGIAR, Consultative Group for International Agricultural Research. That is very important in the context of India, in the context of South Asia, in the context of Southeast Asia as well. Why? Let's think about the last event that happened here in 1958. When the delegation came here, what did they see? More than 60% Indians were poor, below the poverty line. And at that time in the 60s, as a student of development economics, what did you study? We studied things like all international development experts at that time were writing of India and South Asia. So they had books like named trials, meaning these countries are not going to make it. So don't worry about them. Let's save ourselves. That was the kind of philosophy that dominated the West in the 60s. Lifeboat ethics is essentially that point. What is the lifeboat ethics? You try to save yourself. That's exactly what the thinking was. And then comes this Green Revolution, science and technology. These are very fortunate coincidences. So that transformed Indian agricultural landscape. I can tell you, the CGIAR system, all the success stories system has written over the last 55, 60 years, included India and South Asia. Because it was remarkable. But at the same time, we're confronted with today is very different. We are thinking about not just growing more food for hungry. Think about it. Our ancestors in the 60s who were doing policies, what was their prime objective? What was the priority for them? It was to feed hungry people in the continent. They did not think about soil degradation. They did not think about water depletion. They did not think about climate change. We have policymakers in the dais, Professor Ramesh Chand ji, Dr. Himanshu Pathak ji, Dr. Vittal ji. When we make policies, what are the basis for that? The basis is the science that we have at a given point in time. Based on the science and knowledge, we develop policies. Our ancestors developed policies based on the science and the need of the day. But the science is ever evolving subject. It will evolve over time. So as a result, what we are thinking right now is the system transformation. We are not saying structural transformation, which you might have heard in economics. What we want is an overall structural transformation, being agrarian-based to industry-based to information-based. But food system has become so important in the context of all the challenges that we are facing today that we have to think differently. I would like to share with you that my DG, Professor Johan Suinen, leads the program, global program on system transformation. So the CGIAR system has created a theme. It's called the food system transformation. The theme of this conference is going to be on that. As Dr. Pathak ji pointed out,
key point here, transformation, sustainability, and food system. All of them are needed because the challenges that we are facing today, India facing today, there has to be solution. Not solution alone by India, solution in cooperation. And that is the spirit actually you have seen in the G20. You know the statement, one earth, one family, one future. Why do you need that? You need that because challenges that we are facing today in that actually critical for the existence of humanity, climate change, soil degradation and other, they are not confined within the boundaries, geographic boundaries of a country. They go beyond. That's why we have to think that way. And India in that sense, leading the way to showcase it to the rest of the world. So that conference like this, we think as an institution, part of the CGI institution, are critically important to send that message to the global south as well as to the north, so that it sinks in and becomes part of their conversation as well. With those words, I thank you all very much. I think everything is covered today and look forward to interacting with you in the future. Thank you so much. नमस्कार। इस संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ लोग यहाँ पहले भी आते रहे हैं। दास साहब हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं लेडी किसान से। बाकी आप सभी जो पहली बार आ रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा इस संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा कि इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो एक किसी मकसद को लेके हुई थी कि आईसीआर में उस टाइम जब 1991 में जब हुआ था तो आईसीआर में उस टाइम एक पॉलिसी रिसर्च की बहुत बड़ी कमी थी कि आईसीआर को जो हमारे जो रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको पॉलिसी एविडेंस बेस्ड फीडबैक कि किस तरह की हमारी जो रिसर्च पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह की जो दूसरी पॉलिसी जो रिसर्च को गवर्न करती हैं, उसको लेके इसकी स्थापना हुई थी। मतलब जैसे कि मैडम ने कहा कि एविडेंस पोस्ट पॉलिसी इनपुट, बट आई विल से इन टुडेज कंटेक्स्ट दैट इज दिस काइंड ऑफ साइंस पॉलिसी इंटरफेस दैट इज इम्पोर्टेंट particularly when we are there in the setup of Indian Council of Agriculture Research. And since then, of course, it's almost, you can say, more than 30 years, 3 decades of existence. We have done a lot to provide input not only to the ICR, but other associated ministries and departments of the central government as well as the state governments. And testimony of this is that 2 of the directors of this institute, they are sitting here, Professor Ramesh Chand and Dr. P.K. Joshi, my predecessors. So you can imagine that kind of work and the quality of the work that this institute has been delivering on this. Anyway, and more on this you can find on our website. Particularly there are 2 of our flagship products. One is the policy papers, which comprises about say 30-40 pages. Another is a 4-page policy brief on contemporary issues. And in the given context, this coming to the context of this conference, now that this theme, particularly addresses a number of several issues, but the 3 key issues that the humanity is facing today. One is the climate change, and another is the degradation of the lands and the water scarcity. So how we can overcome those kind of challenges? Of course, there are technologies. For the technologies to reach the fields, it requires appropriate kind of policies and institutions. Here, of course, I remember Dr. R.S. Puroda, him very well. He often quotes Norman Borlaug. Why Green Revolution could not succeed in Africa? And his answer was that India, of course, there are things. For in Africa, of course, I have the technologies, but from where I should bring the policies, institutions for that, take the technology to the farmers' fields. Anyway, in this institute, of course, we work with this, particularly if I see the theme of this conference, it very well aligns with the activities to this institute
in particular and to the policies of the government of India in general. And moreover, as Professor Ramesh Chandra has said, that our goal of Viksit Bharat by 2047. So the kind of policies, etc. So we have to transform our food system to be more, efficient, to be more inclusive and more sustainable. So here we conduct the research of basically on three themes. One is of course the technology policy and impact evaluation, and I am happy to note in the conference program that on second there is a dedicated session on impact assessment, and our agricultural friends from agricultural economics and friends from India, young scholars, they will immensely benefit from that kind of session being organized in this conference. Now another is of course that markets and trades, so number of issues, whether it's a market reforms or institutional reforms, contract farming and all those kind of things, issues, price volatility, food inflations. So that of course that are also very well attempted or researched here. And then finally of course that how we can accelerate the growth. So what are the sources of growth and what are the drivers of growth? So all these kind of inputs of course we will be getting this from this conference. Another important point of course Dr. Professor Ramesh Chandra mentioned in passing. Now if you see that I said 3 A's, agricultural economics, in advanced countries has advanced like anything, particularly in the methodological aspects, impact assessment, policy evaluation, and we are lagging behind. So this provides huge opportunities to the young scholars to interact with the people say from US or UK or Europe, those who have been working on those kind of issues, to develop networks for their future research, and of course they have to be facilitated by their respective institutions here. Now again of course any kind of policy, generally we talk about the technology failure or institutional failure or policy failures. So why this kind of failures they emerge in that? Because the goals of the policy, any policy, there are 3 goals, particularly to improve the efficiency, to improve sustainability and inclusiveness. And sometimes they becomes very conflicting. There are trade-offs among the kind of policies, particularly if you take the case, but a policy which improves the efficiency, it is not necessarily it will lead to inclusiveness or the sustainability of the system. The simple case you can take of the policies related to MSP or the fertilizer, which have been continued for long. We have not reformed those policies, keeping in view the emerging challenges that Indian agriculture and the global agriculture that will be facing in the years to come. So hopefully there are number of sessions being organized in this conference to look at this kind of issues, and it will provide a lot of learnings for us, how to realign our policies to the emerging challenges, how to minimize the trade-off among this kind of different objectives. Another of course another policy is that of course there is also a session on subsidies, and it's a contentious issue. Subsidy is always a contentious issues, and if you see its political economy, it's really very complex. Now once you provide this kind of incentives to the farmers, and you don't realign those incentives with the changing economic and environmental conditions, then it's really becomes very difficult. So this kind of subsidies particularly, because the gains from the subsidies, they are immediate, kind of knockout effect. While the investment, it takes time to give the results. So this kind of subsidies, they crowd out the investment particularly, and they are damaging to the system. Now another of course, if you see those who are from this region, northern India, crop diversification, we have been talking a lot, particularly diversification in Punjab and Haryana. Why the Punjab, why this rice cultivation became so sticky in these regions? Why we are not able to diversify or wean farmers away from rice cultivation? The science base, the science of you can say the natural resource persons, the scientists, they say okay, maize is suitable, can suitably replace paddy. But what about the profitability of that? So
we provide resource-based kind of resource endowment-based planning strategies, but they are not accompanied by incentives to win the farmers. So can we have some kind of learnings? There are some sessions on that, how the crop planning it can be clubbed with a kind of economic incentives with the farmers. And of course, when we talk about the food system, it is from genetics to end consumption. We have been talking, there are a number of stakeholders involved, from genetics to end consumption market, from traders, commission agents, and of course the final consumer. So what kind of value chains, how we can improve the efficiency of the value chain, how we can improve inclusiveness of the value chain, how the value chains can be made sustainable in the long run. So all these kind of things, of course, they will be happening. And then, as I said earlier, how we can bring synergies among different kinds of programs and policies to transform India's agriculture food production system. So once again, with these words, I thank you all for your careful listening. धन्यवाद डॉक्टर विठल. कुछ अपनी कही हमने, अब कुछ उनकी भी सुनी. Now it's time for question answers. I would request press and media to kindly raise their hands. Any question related to this conference which still remain unanswered, please feel free to ask. तो बहुत लंबा समय लगेगा. हाँ जी. अच्छा, साउथ एशिया से. हाँ. सेपरेट है साउथ एशिया. साउथ एशिया से मेरे सामने लिस्ट नहीं है, लेकिन साउथ एशिया से अभी तक जो हमें पार्टिसिपेशन आया है वो आया है सर, क्या कहते हैं इधर, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम. सर जितने भी कंट्रीज़ हैं, अभी सिर्फ पाकिस्तान के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वीज़ा अप्रूवल नहीं आया है. बाकी लोग जितने भी कंट्रीज़ हैं सबसे पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ है, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं. 75 कंट्रीज से पार्टिसिपेट. क्या डिस्कस होने वाला है. दूसरा है टेक्निकल इश्यूज एग्रीकल्चर के. यदि हम एग्रीकल्चर के टेक्निकल इश्यूज लेने लगे और डिस्कस करने लगे आज, नहीं, मैं दूंगा आपके प्रश्न का जवाब, तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बाकी लोगों से ये गुजारिश है कि टेक्निकल इश्यूज इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस आप रेज करिए कि ये कॉन्फ्रेंस इस इशू को कैसे एड्रेस करेगी. आपने पहला सवाल उठाया है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. आपका पहला इशू है मैकेनाइज्ड फार्मिंग वर्सेस मैनुअल लेबर फार्मिंग. कोई भी मैनुअल लेबर फार्मिंग compete नहीं कर पाएगी जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे इंटरनल ट्रेड है चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड है, यदि वो मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे. मैकेनाइजेशन से एफिशिएंसी आती है. आप कहीं से भी डेटा ले लें, यहाँ तक कि लोग नरेगा का वर्क भी मशीन से करा के लेबर वहाँ शो करते हैं. तो क्यों करते हैं? क्योंकि नरेगा से कॉस्ट, मशीन से कॉस्ट बहुत कम आता है. आजकल मशीनरी के अगेंस्ट इसलिए हमें बात करनी चाहिए कि उससे कोई एक्सेसिव अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर तो नहीं होता, उससे वेजेस सप्रेस तो नहीं कहीं हो रही, तो उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल का शेयर वर्सेस लेबर का शेयर, उसको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पहुंचता. तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है एफिशिएंसी के लिए. दूसरा ड्रेजरी कम करने के लिए. मैं अभी भी सब लोग जानते हैं, कोई नहीं कि मैंने ही ऑब्जर्व किया. आप राइस का ट्रांसप्लांटेशन देखिए, झुककर 5-5 घंटे एक ही फील्ड में कीचड़ के बीच में ऐसे वो ट्रांसप्लांट लगाते रहते हैं. कभी आप उनसे पूछते देखिए कि कैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, कैसे आपको बैक एक की प्रॉब्लम होती है. तो यदि हम मैकेनाइजेशन ड्रेजरी कम करने के लिए करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो ये डिज़ायरेबल मैकेनाइजेशन. मैं थोड़ा ये कहूँगा कि जो मैकेनाइजेशन, जैसे आजकल बात हो रही है कि भाई रोबोट, आप रोबोट ले आए तो वो अमेजोन के एक ही स्टोर में 5-7 आदमियों की छुट्टी होगी, वो रोबोट ही वहाँ सब कुछ कर रहा है. इस तरह की मैकेनाइजेशन को हमें थोड़ा सा चेक रखना चाहिए. लेकिन जो मैकेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाती है, ड्रेजरी कम करती है, उसको हमें जो है प्रमोट करना चाहिए.
फूड प्रोसेसिंग जो है उस पर ज़रूर एम्फेसिस देना चाहिए। वो इसलिए भी देना चाहिए, जो मैंने जिक्र किया 22-23 का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा आया है, यदि आप उसको 11-12 के डेटा से कंपेयर करो तो उसमें अलग अलग ग्रुप हैं। सीरियल की डिमांड कितनी बढ़ी, डेयरी प्रोडक्ट की कितनी बढ़ी, दालों की कितनी, तेल की कितनी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट प्रोसेस्ड फूड की डिमांड में आ रहा है। तो जो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होती है उसका हर एक कंट्री को एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि उससे एडवांटेज लेने में आपका खर्च नहीं होता। वो डिमांड खुद ही उसको जो है आगे ले जाना चाहती है, उसको ज़रूर करना चाहिए। और मुझे आशा है नए डायनेमिक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर से कि वो बहुत एंथ्यूज्ड हैं। मेरी उनसे बात हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में हुई थी और थोड़ा सा मैंने भी उन्हें बताया कि इसमें क्या बॉटल नेक्स आती हैं। मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो फूड प्रोसेसिंग जो आज तक एक अंडर इन्वेस्टेड नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है उसको ड्यू प्लेसमेंट। तो हमारा देश में जो ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर को कितना इम्पोर्टेंस मिलेगा? नहीं, हम टेक्निकल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट आपसे किया है, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आप जो है सवाल पूछिए। यदि मैं इनमें गया तो इनकी फिर कोई सीमा नहीं है। ये बहुत लोगों के मन में उस तरह की जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, हाँ, तो हमारा देश का एग्रीकल्चर का कितना इम्पोर्टेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ फूड वैल्यू? ऐसा है, 2 तरह के गेन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट गेन होते हैं बहुत सी सिचुएशन में डायरेक्ट गेन से उनसे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब यदि आप देखो कि सबसे ज़्यादा किस देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 1000 में 170 प्लस 60 स्टूडेंट, तो 25% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि मेरे एरिया में कौन आदमी कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो पॉलिसी बनती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये मोस्टली स्टेट्स में एक कमज़ोर एरिया है। लेकिन मैं पहले ही दिन का प्रोग्राम देख रहा था कि कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी टफ्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, विलियम कॉलेज, सिमट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और मतलब ऐसे वेगनिंगन यूनिवर्सिटी। तो ये लोग हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि 3-4 हमारे लोग भी हैं। तो जो हमारे लोग हैं उनको उनसे एक लिंक उनका बनेगा, आगे के लिए वो अपनी नेटवर्क कर पाएंगे। और सबसे बड़ा यही है कि एक दूसरे से लड़ने और अपनी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना, वो भी है। और इस प्रोसेस में कई हमारे भी चीज़ें होंगी जो हम उनके ध्यान में लाना चाहेंगे। जैसे मैं देख रहा था कि एक सेशन सॉइल पे है, अभी मैंने देखा कि सेशन एक सॉइल पे है। तो हमारे यहाँ जैसे हम कोई शेयर करना चाहें, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जीरो टिलेज हमारे यहाँ कैसे जा रहा है और जगह कैसे जा रहा है। यदि मैं कहूँ अर्जेंटीना में पिछले 35 साल में कोई भी खेत टिलेज नहीं हो, जीरो टिलेज में खेती चल रही है। एक्सेप्शन होगी कोई एक आधी, आपको हैरानी होती होगी ना कि क्या ये सच है कि अर्जेंटीना में पिछले 35 साल में किसी भी खेत की जो है जुताई नहीं हुई, उसके बिना फसल हो रही है। तो हम उनसे ये लर्न करें कि ये कैसे संभव है। और जो हम कर रहे हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में हमारे से कुछ सीखना चाहता है, अच्छे हमारे यहाँ भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी हमारे से सीखें। हमारा स्मॉल फार्मर कैसे एफिशिएंट है। ब्राज़ील के फार्मर के पास 1000 हेक्टेयर है, हमारे फार्मर के पास 2 हेक्टेयर है, लेकिन फिर भी हम कम्पीट करते हैं। तो वो हम स्केल को कैसे एड्रेस करते हैं, ऐसे मौके मिलेंगे एक दूसरे से। सर जी सर, एक प्रश्न है हिमांशु जी से। सर हिमांशु जी, मैं पोलिटिकली आपसे ये जानना चाहूँगा, ICAR बहुत अच्छा काम कर रहा है और सारे स्टूडेंट भी आपको बहुत तारीफ करते हैं। कुछ स्टूडेंट का एक छोटी सी क्वेरी है या कोई शिकायत है कि उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं।
आपके ग्रामीणा लक्ष्मीबाई कॉलेज है झांसी में, वहाँ से मात्र 17 ऐसे स्टूडेंट हैं एक सिस्टम में जिसको एनटीएस नहीं मिलता। आप तो सभी को एनटीएस दे रहे हैं। इसके बारे में हम अलग से बिल्कुल चर्चा करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, उस स्टूडेंट के साथ भी करेंगे। आज की जो चर्चा का विषय है उसी में थोड़ा रखा जाए, लेकिन मैं एक बोलना चाहूँगा, कोई भेदभाव परिषद की ओर से किसी भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो नहीं किया जाता। लेकिन जो आपने कहा कि आपके साथ बात करेंगे और उसको भी Professor, can I just make a quick comment? So, I just wanted to comment on the question about technology adoption that you have raised, and also the question about what is India's benefit. These are the two questions I'd like to address based on my international experiences. So the first question is, so on the first question, technology doesn't have to be always farmers. So if you look at the farm size in China, it's much smaller than farm size in India. But they have come up with a mechanism, they call this, the companies involved, where they do all the plowing to harvesting, all of this, it is done by a small companies. If you go to Bangladesh now, you will see that most of the cultivation is mechanized, but these are all small farms. So rental market has developed, for example. So that system is possible. It hasn't come to India yet, and we have to work on it. Some of the issues related to that, policy issues related to that, is the prohibitive tariff on something, and also creating that environment to promote this service delivery mechanism. They call it service delivery mechanism. So someone has a thresher, for example, they'll go from door to door to thresh the paddy. Even the drying machine in Bangladesh, the smallholders, they have the paddy drying for the rainy season crop. These are a small machine, portable, goes from place to place, can dry only a ton per day. But these are very influential in promoting mechanization. So that is possible. And you point about what is India's benefit. It is not only India's benefit. Where India is today is sharing with the rest of the world is also important for India. India's accomplishment will be shared, and the kind of participants you have in this event, let me, Professor Ramesh Chandni indicated Cornell University, University of Illinois, Michigan State University, University of California, Berkeley, you name it, all big institutions in the world will be participating here. On top of that, I was just looking at it, Australian Council for Agricultural Research, Chief Executive Officer will be here. World Bank Global Director for Food and Agriculture will be here. And convener of the UN Food Summit, Professor Joachim von Braun will be here. And Chief Economist of the FAO will be here. And Director at the some UN system, I'm just blanking that name, Jonathan Brook will be here. So there are many big name professionals who will be there, and this is kind of showcasing what has been happening in India as well as learning from others. I think that's what we have to do. Thank you. आइस बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, इस तरह की जो हमारी एजेंसियां हैं जो निर्यात में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी भी एग्जीबिशन वहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें जो हैं किस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है निर्यात में, एफपीओज में, ये सब चीज़ों का प्रदर्शन भी हम वहाँ पे करेंगे। If there are any other questions, or we can take just one last question and then we can break for lunch. Apita is also sponsoring us, yes, but I don't think they are. Do they have a stall here? No. But there will be people from Apita who would be coming here. They don't have a full-fledged stall all the time, but they are coming here. Give us the list of